Hi, Namaste. Wish you all a very happy new year, and you are most welcome to this channel called Kuch Meri Suno. I'm very excited because नया साल है इसलिए month हमने शुरू किया था and so this month me and Manas we have decided we will share 3 stories और अगर हम लोग में इतनी हिम्मत रही और हम इतने ही लोगों को मिलते रहे तो डेफिनेटली फरवरी मंथ से या मार्च से हम वीकली वंस एक स्टोरी शेयर करेंगे. सो ब्लेस अस प्लीज़ एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्टोरीज आपके साथ शेयर कर सकें. सो आज हम मिल रहे हैं दिव्या को. पिछले मंथ मेरी एक शूट थी बॉम्बे में एंड ड्रेस ट्रायल होना था एंड हुआ नहीं. सो हैड वन डे एंड आई वाज थिंकिंग कि चैनल के लिए कोई एक स्टोरी मिल जाए एंड रात के 10 बजे एंड आई वाज कॉफिंग. आई हैड वायरल तो आधा मन था जाऊँ आधा मन था नहीं जाऊँ एंड सो आई टेक्स्टेड हर फॉर समबडी एल्स, एक और फ्रेंड के लिए उसका नंबर मांगने के लिए. दैट डिडंट वर्क आउट. वो भी आएगी कुछ महीनों बाद. शी विल डेफिनेटली बी देयर. सो फिर मैंने दिव्या को बोला, दिव्या वुड यू माइंड कमिंग, शुड आई कवर योर स्टोरी? एंड शी वाज लाइक या आई विल बी वेरी एक्साइटेड शीतल, द ओनली इशू इज़ कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया. एंड शी वाज सो स्वीट. ऐसा बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैं आज तक नहीं बोल पाई हूँ. मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया वो किया. तो गाना गाने की आदत होती है ना. सो मेरी बहुत है. सो मैंने पहली चीज़ उससे यही सीख ली कि कम बोलना चाहिए और ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. सो नेक्स्ट डे मैं उससे मिली एंड इट वॉज लवली सीइंग हर द वे शी हैज़ ग्रोन. लाइक शी इज़ वेरी गॉर्जियस and she has a grace, and I've seen her like the way she has grown. It's remarkable, and it's an honor to share her story. Hi, Namaste. This is Sheetal Dimri, and you're most welcome to this channel called Kuch Meri Suno. And कुछ हम आज दिव्या की सुनेंगे. So I have come to Mumbai, and this is her place, and we will understand what all she does. हम दोनों काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं. 2008. हाँ. So her daughter and मेरा younger one, same age group. So that's how we know each other. Birthday parties and all blah 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 blah. So I have learned a lot from her, and she has done amazing work. अभी कुछ सालों में, and I know बहुत पढ़ाई की उसने पहले. So I know her that much, but अभी उसने क्या क्या किया है better we know from her only. So okay दिव्या, बता क्या क्या पढ़ाई की थी पहले? So बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स आईटी किया, फिर प्रोग्रामिंग किया उसने. मतलब दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप. तभी आईटी बूम था, सो एवरीबडी वाज डूइंग आईटी एंड आई वाज टेरिबल. I was terrible. मतलब I did it, but I just did not like it. मतलब but ठीक है, हो गया वो. You needed that degree. Everybody was doing it. तो उसके बाद जॉब भी मिल गया. So did that. But ठीक है, then you're earning, then you get into that corporate rut. Then the years went on. Then after that, then marriage, then बच्चा. Then you're like, अच्छा, now like, do you want to go ahead with that? So you're working when you conceived? Yeah, I worked till like literally 2 weeks before I had my baby. Okay. So and yeah. Then you quit? Then I quit. Yeah. Okay. कितने दिन टाइम? कितना month? साल? You didn't do anything? 2007. 2007 till 2009. Yeah. So this fine. So manageable था? हाँ, see first 1 year is वो तो बच्चा हाँ पता ही नहीं चलता, बड़े हो रहे हैं, all the firsts in life. तो वो हो रहा था. Then after that, once the baby starts going to school, then feel अच्छा, and then you see your contemporaries, okay, they are getting places. So then in the meantime, my daughter started going to preschool, and then I was like how she's learning. So I just used to pay attention on that, like कैसे, how, like where, what are her struggles, and then I connected with one of her coordinators, one of her teachers. I somehow something clicked. Like I said, what, I like what this girl is doing, and I said, I like her energy. Like what she's doing now, I want to do something like that, something related to children. And she's amazing. बच्चों के साथ I've seen her. मतलब पता नहीं चलता बच्चे कहाँ हैं, वो कहाँ है. She's too good.
she's amazing with them, you know. Like बच्चे ना वो एक बच्चों की आँख में ना एक चमक आती है, sparkle आता है. They have that whenever she's around. I have seen that. My mother's been a teacher, and my mother was a preschool teacher for the longest time. So you know, then my one thing that used to always fascinate me was मेरे मम्मी के ना after every month they had in their school they had a rule that they should write a paragraph about how their child is doing. I used to love watching that. I used to love reading what she has written. जब पढ़ाई करती थी तभी सब नहीं समझ में आता. नहीं तभी तो मम्मी कर रही है ना, तभी तो मम्मी का how will you follow your mother's profession? तभी वो घर की मुर्गी दाल बराबर था. True. You know, it was like that. So I never thought कि नहीं वो तो मम्मा कर रही है यार. So once you started with going to school with your kid, you हाँ, felt then I was like this is something which हाँ. Then I started doing my own research किया. Then I said okay, let me just do the course and see. You know, then I did the course and so I joined a small preschool. So there I worked for about for a long time. From 2010 I joined them, 2009 and 2010, and then I went on till about 2017. Then I got into this phonetics, why are children struggling. So that was my next thing. So now I need to start something on my own. So again, that's how she started her naya venture, apna khud ka venture. So when you started that? I started that in 2006. 15-16. Remember there were 3 ladies. ऐसे आपके छोटे बच्चे हैं ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो देन अरे मैडम हमने कल ही लगा दिया. ऐसे अच्छा यार ठीक है कोई बात नहीं. अब याद रखना मैं दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. यू नो आई टोल्ड एवरीबडी मैम स्टार्टिंग. एक चीज तुझे तूने इतनी सारी पढ़ाई की थी, तूने कॉर्पोरेट में जॉब की होगी, मतलब तेरा पे स्केल भी खतरनाक होगा दैट टाइम. सो सडनली देयर वाज अ ड्रॉप, ठीक है, एंड देन तूने एबीसीडी से शुरू किया. यहाँ पे स्केल के मतलब नाम पे कुछ नहीं होगा, तेरे मेक का पैसा भी नहीं निकलता होगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली, या. सो व्हेन यू वर आस्किंग फॉर लाइक बच्चों को भेजने के लिए, डू यू फील, मतलब तुझे कभी ऐसा फील हुआ कि भगवान मैं क्या कर रही हूँ मेरी लाइफ में? डिड यू फील एवर? When I was working in the school, it was to keep myself busy, to keep myself motivated because my child was young. I had to give her time. Then when I started on my own and was calling people कि आओ come and just try me out. So तभी it was for कि मेरा passion है. And then I was like हाँ, because I knew that by then I had understood कि ये vibe मेरा है. कभी लगा नहीं ऐसा? नहीं. So there हाँ money came कि अच्छा इतना हो. I was actually surprised कि अच्छा इतना भी मिल सकता है. Okay. Then I said, अच्छा तो ये भी ट्राई कर ले तो अच्छा इतना भी मिल सकता है टीचिंग को. So then I said, boss, it is a good career. तो वो so money came later, but I was like, wow, इसमें पैसे भी हैं. Exactly. Passion तो पैसे भी हैं, पता नहीं है जो. हाँ, तो then after a point I was like, नहीं बस अभी तो then what happened ना? You become serious? Then I became more serious. I became a little more money conscious. I was like, boss, now I want to. You can make money. I can make money. You put in ना वो तो पैसा आएगा. पैसा तो आएगा. If you're good, people will pay. हाँ, तो obvious है, वो तो understood है. Correct. करना क्या है वो देखो. Exactly. So what all you do? That I teach children English, how to read and write English. Very basic level. A 5-year-old comes to me, I teach them how to read English, and I slowly start teaching how to write, teaching them how to think in English and start speaking, so that the whole thought process in their mind changes. How can this tune हो रहा है. हाँ. And what about that storytelling वाला? Yeah. She's too good. She's so cute. She's as such very cute. मैं उसे हमेशा बोलती हूँ. So वो जब स्टोरी सुनाएगी ना, she'll be like, yes, हम big time. तुम भी मतलब any age, अगर कोई बड़ा बच्चा मतलब मेरे जैसा भी आदमी अगर ऐसे ध्यान से देगा, मतलब वो बहुत अच्छा सुनाती है स्टोरी. She's too good. So sweet. So Thank you. what was that? See, what happened was, so storytelling also was, was happening a lot of. In fact, I have a good storyteller friend. So she does story, and she's a professional storyteller, international storyteller for many years. Then she was having a 1 or 2 day workshop. I attended that. Then I did another course. Then I did a lot of wherever I could get. जहाँ पे भी because my work was on, so I could not take much छुट्टी. तो जहाँ पे भी 1-2 दिन का वर्कशॉप होता था मैं पहुँच जाती थी. थाने here there. हाँ, I've gone. Oh man. Puppetry कर लिया, clowning कर लिया. Nice. And storytelling में बच्चे को क्या करते हो? You teach language through storytelling? See, storytelling is many folds. That's what I wanted to understand. Yeah. So for the younger children, when I tell them a story, so one, they are picking up the language.
हाँ. Okay, then so that comes the entertain there, and they are loving the story because I have told they're loving the story. Then with my kids I go a little further. Then I say, okay, now let's write about it. How do you describe the characters? Creatively लिखना सिखाते हो. हाँ. So Okay. basically, ultimately I get them to develop the language And express themselves. Yeah. And now kids are very vocal. Oh, So they are, good time. yeah. So then also we have to understand that they have that energy, but also we need to give them that channel to express it. So in storytelling, what I do is, one is of course telling stories to the children. Second, that my next level is also getting them involved, teaching them moral lessons. कि एक story से बताओ कि how not to hurt a child, or if somebody hurts you, and if उनको पता न चले और कन्वे हो जाए. exactly. So सारे बच्चे आते हैं तो you teach language. Yeah. And then the phonics. Phonics, yes. Main. So younger. हाँ, तो and then storytelling to understand the language more. Yes. And then whatever you want to teach Yes, them whatever in a I very want. indirect way. Yes. So this is what it is. Yeah. So you have age group of? So my age group starts from 4 years, like 4 years, and now up to 8 years. So you Age take group. online classes also? Yeah. So जो बाहर है, बॉम्बे के बाहर हैं, और Yeah. बैंगलोर, दिल्ली. So that's all my online group. How you see yourself down the line, like 5 साल 10 साल, you'll be done with your kid, Yeah, 2 yeah, years yeah. हम free हो जाने वाले हैं. So उसके Correct. बाद have you thought of it कि नहीं, जैसे होते जा रहा है, जैसे तूने अभी तक रखा है कि जो हो रहा है होने देते हैं, that's how it is, or you have target some? Target in terms of learning and what I want to do. Children with learning disabilities. जो हम लोग हमारे मतलब our education system or even parenting methods, and we just don't address it कि बच्चा weak है. I did my course on teaching children with learning disabilities. So now I want to get into counseling because it goes hand in hand. Yeah. Because a lot of counseling to the parent, नहीं, तुम्हारे पास लाइसेंस हो तो it becomes more correct, yeah. ज़्यादा ऑथराइज लगता है. और बच्चे का स्ट्रगल अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते ही नहीं आजकल. So you studied something different. करेक्ट. ठीक है, तूने ब्रेक भी लिया बच्चे के लिए. Then you started with something कुछ नया ही. So आज जितने भी हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो सोच रहे होंगे हम सब स्ट्रगल करते हैं, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे हैं कहीं जा नहीं सकते, बट कुछ करना है. करेक्ट. So what do you suggest? कोई जादू है, पता चलता है कि नहीं पता ही नहीं, बट ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. भले something try, something will click. If it is good, तुम करो, आगे बढ़ोगे, अगर नहीं छोड़ दो, दूसरा कुछ ले लो. ये मुझसे छोटी है एंड मुझे बहुत कुछ सिखाती है. कल से मुझे बोल रही है कि पता है कोशिश करो ना, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है खुद ब खुद. की लर्निंग थी, एंड सेकेंड लर्निंग मेरी ये है कि यू शुड ट्राई, यू शुडंट स्टॉप ट्राइंग, व्हिच इवन आई से. सो इट वाज अ लवली मीटिंग. हम घंटों तक बात कर सकते हैं, हम घंटों तक आपको भी स्टोरी सुना सकते हैं, बट वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट. So you can follow her. She has an Insta account. Yeah. And we'll share all the details. Yes, I'll share so that you with can you. contact her. She has online classes and she's too good. Storytelling का भी अलग होगा. You can give it a try, right? Yes, People can approach you, right? Of course, yeah. You can work it out, right? Yes. So you should try. दिव्या की स्टोरी सुन के आपको लगता होगा, okay fine, ये भी हो सकता है, right? So for the time being, हम लोग बातें करते हैं. आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. Till then, bye bye. Thank you.